Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I am Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar. नमस्कार मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक तथा शेयर बाजार के ताजा समाचार आपके लिए लेकर आए हैं और हम उन पर चर्चा भी करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ में। लालिमा, क्या हेडलाइंस है आज की? Yes, here we go with the headlines. Domestic stocks witnessed losses of 1%. Sensex closes near 60,100 points. Nifty settles near 17,900 level. The rupee strengthens 57 paise against the US currency to trade below the 82 rupee per dollar mark. And Brent crude hovers around $80 per barrel. घरेलू शेयर बाजार में 1% की गिरावट। सेंसेक्स 60,100 और निफ्टी 17,900 अंक के आसपास बंद हुए। रुपया आज डॉलर के मुकाबले 57 पैसे मजबूत होकर $82 प्रति डॉलर के स्तर से नीचे आकर बंद हुआ और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $80 प्रति बैरल के आसपास। और श्रोताओं, कार्यक्रम में तमाम खबरों पर चर्चा के लिए आमंत्रित आर्थिक विशेषज्ञ हैं अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सेंसेक्स के साथ में। तो घरेलू शेयर बाजार में आज 1% की गिरावट हुई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की प्रमुख 30 कंपनियों का सर्वोच्च सूचकांक 60,100 के आसपास जाकर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 50 प्रमुख कंपनियों का सूचकांक 17,900 के नजदीक पहुंच गया। वैश्विक शेयर बाजार के मिले जुले रुख के चलते दोनों सूचकांकों में सुस्ती आई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 632 अंक नीचे आकर 60,115 दर्ज हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 187 अंक लुढ़ककर 17,914 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों में भी नरमी आई। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.49% के नुकसान में रहा, जबकि स्मॉल कैप्स इंडेक्स 0.46% नीचे आ गया। The Sensex and the Nifty today fell around 1%. Index of top 30 companies at the Bombay Stock Exchange ended near 60,100 points. The index of top 50 companies at the National Stock Exchange closed near 17,900 level. Both indices declined amid mixed global cues. The Sensex plunged 632 points to settle at 60,115. Nifty also slipped 187 points to finish at 17,914. In the broader market at the BSE, the mid-cap index fell 0.49% and the small-cap index ended 0.46% down. In the Sensex pack, 8 companies posted gains while 22 witnessed losses. Tata Motors was the top gainer as it rose 6.1%, followed by Power Grid, which added 1.3%. Tata Steel climbed 1.2%. On the other hand, Bharti Airtel declined 3.2%, SBI fell 2.1%, and HDFC Bank ended 1.8% down. In sectoral indices at the BSE, 4 sectors gained while 16 logged losses. Metal index gained 0.7% and healthcare sector rose 0.2%. On the other hand, telecom plunged 1.6%, while banking and finance both declined 1.3%. Tech slipped 1.2%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,422 companies gained while 2,099 fell. Shares of 133 companies remained unchanged. So Avinash, post-COVID and post-pandemic, when we had touched nearly 64,000, it was time to rejoice. And now we see that we are hovering around 60,000 in the Sensex numbers. Do you think this is a natural correction, a bubble burst, or just a time to sit back and ponder what's going wrong? Yeah, I think basically what the market is witnessing is a lot of profit booking at higher levels, and I think the market in the last few weeks has seen a decent amount of exhaustion at around
62,000 on the Sensex and 18,300 on the Nifty. Key reasons why the market corrected today was basically because, I think yesterday TCS numbers came in which were slightly disappointing. The markets were expecting a better set of numbers. The commentary was also cautiously optimistic. The stock has underperformed even today. And most importantly, with rising interest rates expected in the US, there are fears that Fed may further, increase interest rates beyond 5%. And that means in the very near term, even in the Indian context, interest rates may go up. So that is also a concern which is hovering around. Plus, the budget is few weeks away. We could expect a little volatility before the budget is presented on the 1st of February. But more importantly, on the liquidity side, FIs continue to be heavy sellers. In fact, today also the FIs sold stocks worth about 2,100 crores. But the positive part was that domestic institutions have been buyers to the extent of 1,800 crores. And I think SIP numbers have come in today. 13,700. So I think the markets are witnessing a decent correction. The broader market still looks attractive, but on the index side, maybe in the very near term, this kind of volatility will continue till the budget is presented. And after that, we could see a proper directional kind of call on the Nifty and the broad index. So I think investors should look out for corporate numbers which are now going to be presented because it's earnings season now. Yes. Stock-specific corporate announcements and commentaries would be more important than the broader index. अविनाश, जैसा कि आपने जिक्र किया विदेशी संस्थानों का, तो विदेशी संस्थानों की बजट को देखते हुए क्या भूमिका हो सकती है, किस तरह का रुख देखने को मिल सकता है? अब चूंकि 3 हफ्ते की बात है ये बजट के आने की, तो कैसा रुख देखने को मिल सकता है? देखिए, ये साल प्री बजट वाला बजट होगा और इसमें कोई डाउट नहीं कि गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि हर सेगमेंट मार्केट के जो प्लेयर्स है उनको पुश करे, क्योंकि अगले साल 24 में जनरल इलेक्शंस है जी। अनुमान है कि इस बार मिडिल क्लास को कुछ न कुछ तो बेनिफिट्स मिलेंगी। प्लस कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें तो पिछले साल के जैसा ये बजट ऐसा हो सकता है जहां पे इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग में, कैपिटल गुड्स में इंसेंटिव्स और दे दे, अफोर्डेबल हाउसिंग, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, उसके बाद जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ग्रीन एनर्जी है, ये हमको लग रहा है कुछ न कुछ अनाउंसमेंट्स आएंगे। लेकिन कहीं न कहीं गवर्नमेंट को ये भी कि रिसोर्स की थोड़ी सी कठिनाई है, तो पूरी तरीके से शायद एक्सपेक्ट ना करें कि सब कुछ इस बजट में आए। लेकिन डेफिनेटली कॉर्पोरेट के लिए अच्छी बात हो सकती है कि जो पिछले साल का फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे, वही फोकस अगर इस साल के बजट में आता है तो मार्केट इस बजट को डेफिनेटली अच्छी तरह से पॉजिटिवली रिएक्ट करेगी। और मुझे लग रहा है बजट के पहले तक आपको ये वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। बजट के बाद थिंग्स विल गेट मोर क्लियर। तो मोटा मोटी बजट अच्छा ही आएगा, बट डेफिनेटली तब तक मार्केट्स वोलेटाइल रहेंगे। आई मीन ये वोलेटिलिटी ग्लोबली भी रीजनेबली रीजनेबल है, क्योंकि डाउ और नैस्डैक का मूवमेंट अगर हम देखें लगातार 1-2 दिन में ऊपर और नीचे ये ट्रेंड दिख रहा है, तो उसका भी असर थोड़ा बहुत हमारे इंडियन मार्केट्स पे दिखाई दे रहा है। हम ये कह सकते हैं जो विदेशी निवेशक हैं, खासतौर पे जो जिन क्षेत्रों में भारत में निवेश करते हैं, जिस क्षेत्र के शेयर्स खरीदे जाते हैं उनके द्वारा, अभी तक उनमें यही दिखा गया कि ज्यादातर वो फायदे में ही रहे। एक लगातार पॉजिटिव रुख उन्होंने बना करके रखा है, जो कहीं ना कहीं हमारे देश के जो घरेलू निवेशक हैं उन्हें भी आकर्षित करता रहा है। बहुत सारी चीजें होती जो घरेलू निवेशकों को आकर्षित करती हैं, तो जैसा इनका रुख रहेगा उसी तरह के परिणाम भी हमें सामने देखने को मिलते रहते हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, एफआईआईज इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया एक ऐसा मार्केट है जो अभी पूरे विश्व में, अगर हम यूएस और यूरोप से भी कंपेयर करें, दूसरे हम इससे कंपेयर करें, तो 2023 में भी आउट परफॉर्म करने वाला है। और जहां पे भी आउट परफॉर्मेंस होता है वहां पे पैसा आता है, क्योंकि रिटर्न्स के लिए ही एफआईआईज कोई भी इमर्जिंग मार्केट में एंटर करते हैं। तो मेरे ख्याल से आने वाले साल में भी जो सेक्टर्स है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैपिटल गुड्स है, ऑटो कंपोनेंट्स है, यहाँ पे निवेशक करने के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो अभी जो आपको एफआईआईज का आउटफ्लो दिख रहा है वो शायद इसलिए भी होगा में काफी रिडेम्पशन प्रेशर आ रहा है, और उस कारण से इनको कंपल्सरीली अपने स्टॉक्स जो पोर्टफोलियो में उनको बिकवाली करनी पड़ती है। लेकिन हो सकता है आने वाला सेकंड हाफ ऑफ 23 में आपको ये फ्लो पॉजिटिव एफआईआईज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा। अच्छी बात है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास अभी एसआईपी का पैसा हर महीना आ रहा है, और वो पैसा ऑब्वियसली इंडियन मार्केट्स में डिप्लॉय हो रहा है। Well, you've said something very optimistic that 2023 will see even a further betterment of the economy. Talking about specifics, Avinash, metal index gained 0.7% and healthcare sector rose 0.2%. Again, blame it all, I mean, nicely, blame it all on the infrastructure spending. I was just reading in the paper, the copper consumption in the country has gone up by 40%, and we are now, as far as pharma is concerned, we are among the top 5 countries exporting drugs to the US.
this and much more to add for the metal and healthcare sector? Yeah, I think on the metal side, one major trigger has been that now China has clearly said that they want to open up their economy and they want to enter the metal market in a very big way. As everyone is aware, China is a very big buyer of metals globally. Mm-hmm. Metals will definitely do well if China enters the metal market in the very near term. I think already COVID restrictions in China have been removed, and in probability from in the Jan to March quarter, if at all China enters the metal market, and you'll see a lot of consumption and increase in global metal prices, especially in ferrous, non-ferrous, as well as copper, as you rightly mentioned, because in copper there are several mines globally which are closed down and there are supply constraints. So typically we expect the fourth quarter for most of the Indian metal companies to be better. And in fact, in today's volatile market, we saw some of the metal companies like Tata Steel, Hindalco, JSW doing better. As far as pharma companies are concerned, I think again due to the China plus one factor, bulk exports of APIs, drugs have actually got a significant boost for Indian companies. And I would believe this trend would continue for the coming 3 to 4 quarters, because globally now India is recognized as a strong pharma producing base, and eventually, most of the customers want a second line of production, which they definitely would prefer India to play a big role there. So I think pharma exports as well as the metals are definitely sectors which could look up in the next, say, 2 to 3 months, depending on how China opens their economy. अविनाश, हम ऑटो सेक्टर के बारे में क्या कह सकते हैं, खासतौर पे ऐसे समय पे जब भारत एक तरह से तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र बन चुका है ऑटो निवेश के लिए, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, तो इससे हम क्या उम्मीदें लगा सकते हैं? और हम ये भी देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उनको भी लाने की बात जो हुई हमारे देश में, बड़े पैमाने पर ब्लू चिप निर्माण के लिए भी कोशिशें जारी हैं, तो ऐसे में आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, देखिए, ऑटो सेक्टर ये इकोनॉमी का रिवाइवल का एक प्रतीक होता है. जब भी ऑटो सेक्टर में तेजी आती है तभी इकोनॉमी में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं. तो इस बारे में मैं ये कहूंगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर हम पैसेंजर कार सेक्टर की बात, कमर्शियल व्हीकल सेक्टर, ट्रैक्टर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे अच्छी तेजी देख रही है. ऑलमोस्ट सारी कंपनीज के पास करीबन 6 से 12 महीने की गाड़ी की ऑर्डर बुक है. महिंद्रा के पास ऐसे प्रोडक्ट्स है जहाँ पे एक साल कस्टमर अभी भी वेट कर रहा है. कमर्शियल व्हीकल्स में हमने देखा है कि इस साल 25-30% का एनुअल ग्रोथ होने की अपेक्षा है. टू व्हीलर सेक्टर में अभी भी थोड़ी सी मंदी है, लेकिन हमारा मानना है कि रूरल डिमांड जैसे जैसे पिकअप होगा, डिमांड टू व्हीलर्स को ड्राइव करेगा. तो आने वाला साल, दैट इज FY23, ये बहुत ही अच्छा साबित होगा. और नॉर्मली सेकंड हाफ जो होता है अक्टूबर टू मार्च, ये ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए काफी अच्छा होता है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन में गाड़ियां ज्यादा बिकती है. तो महिंद्रा, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, मारुति, हमको लग रहा है कि ये सारी कंपनीज में कैश जनरेशन अच्छी होगी, डिमांड अच्छा होने के कारण. और ऑब्वियसली 1.5-2 साल से कमोडिटी के प्राइसेस भी जो बढ़े थे उसमें भी थोड़ी कटाई देखने को मिली है. इसका असर भी इनके प्रॉफिट मार्जिन में पॉजिटिवली प्ले आउट होगा. You just mentioned rural markets. I was coming to that, Avinash. The tractor sales have been pretty good, yet we see that there is some kind of a slow growth, a modest growth in the rural markets. How would one explain that? Could you please repeat your question, please? Yeah, I said you talked about rural markets. I was coming to that there has been a modest growth in the rural markets. How does one explain that, despite the fact that the sale of tractors has been quite good? Yeah, I think, see, as far as the rural market is concerned, last 2 years have not been good, and I think there have been some green shoots now visible in the rural markets, especially, for consumption products, especially if you talk about FMCG products. Right. As far as two-wheelers are concerned, we have yet not seen a major revival, but our hope is that possibly after the December quarter, we could see some sort of, buying emerging in the rural markets also, because it's almost 2 years since the two-wheeler market has remained almost stagnant. So my sense is that consumer durables, typically, consumer appliances, typically discretionary items, electrical equipment, all these items would get a significant boost possibly in the next, say, 1 or 2 quarters, and that is going to be fueled by good amount of, purchasing power from the rural community. Hopefully we had a good monsoon, and I think that is going to actually play a big role. As far as the demand scenario for all these sectors are concerned. So rural pickup has happened, but it would probably get reflected into stronger numbers in the next, say, 1 or 2 quarters. Yes, you talked about monsoon. We've been doing very well. The wheat production has gone up pretty well.
Yeah, I think broadly, I think wheat production has gone up, which is a good sign because, internationally wheat prices still continue to be quite, elevated. But I think since the government is giving free wheat to a lot of, poor sections of the society, the demand-supply gap is still very large. So possibly for some more time, at least as far as wheat prices are concerned, you'll have to wait for some time for these prices to cool off. Yes, we have seen growth in the third quarter. TCS logged 4% growth yesterday. And what are your expectations about on this, in the coming days? How is TCS likely to perform? See, I think broadly, my sense is things should get better possibly after the March quarter. I think the March quarter will be more important. December quarter also should be equally good, but I think you would see a bigger boost up in the March quarter. And I think most of the analysts and most of the market players would be looking at the March year-end numbers. Clearly, I think post-COVID, across the board, demand has gone up. And not only in terms of value, but in terms of overall volume growth. So I would believe that, we could see better days ahead in the next 1 or 2 quarters. That clearly FY24 starting April should be a good year. We should be looking at a good, strong domestic kind of growth base for, these kind of companies. Right. As you said that the company earnings would be coming very soon. Any prediction, any expectation of the coming, what effect will be the corporate sector will see the results very soon? How do you see the growth of the economy, shaping up in the coming days? Yeah, I think broadly one good part about the Indian economy is that GST numbers have been pretty solid. In fact, they have averaged about 1.5 lakh crores for the last 4 to 5 months. Mm-hmm. A clear reflection that the Indian economy is now getting back into fast growth action. Most importantly, infrastructure, capital goods, hospitality, automobile, auto components, building products, cement. These are all sectors which actually impact the economy positively. And my sense is that you would possibly see a better, stronger GDP growth and a better kind of infrastructure spend. Hopefully, considering the fact that next year is the general election, so the government would obviously like to boost up infrastructure as well as construction, EPC projects also in the coming year. So I think net, it looks quite positive, the market sentiment apart, but I would believe that ground reality proves that demand is pretty solid. And once the numbers do come in for the quarter 3, markets would definitely take a positive note of this. अविनाश, अगर हम पोस्ट कोविड की बात करते हैं तो देश में लगातार टूरिज्म और होटल सेक्टर को बढ़ावा दिया गया है और हम ये भी देख रहे हैं कि लोग घर से बाहर निकल करके बहुत सारी जगहों पर पहुंच भी रहे हैं। इस सेक्टर में एक समय में बहुत ही खराब स्थिति देखी गई, अब यह स्थिति थोड़ी सी पहले से बेहतर नजर आ रही है। आने वाला अब जो वर्ष शुरू हो चुका है, इसमें हम किस तरह की उम्मीदें लगा सकते हैं, खासतौर पर होटल और टूरिज्म सेक्टर से? आपने सही कहा कि देखिए होटल और टूरिज्म सेक्टर पिछले 1 साल से बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और सबसे बड़ी बात अभी कोविड होने के बाद जो पहले कठिनाइयां इन कंपनीज को थी वो अभी पूरी तरह से निकल गई है। अभी जो लोगों का टूरिंग है, कॉर्पोरेट्स का टूरिंग है, वो बहुत तेजी से बढ़ा है और इसका एक मात्र प्रूफ एविएशन सेक्टर में भी है कि एविएशन नंबर्स जो पैसेंजर्स जो एविएशन यूज करते हैं काफी बढ़ गए हैं। इनफैक्ट हमने IRCTC में बात की थी तो वहां पे भी हमको पता चला है कि ऑलमोस्ट 100% गाड़ियां प्रॉपरली नॉर्मल रिज्यूम हो चुकी है। कहने की बात है कि आने वाला जो कम से कम अगला साल होगा वो भी होटल और हॉस्पिटैलिटी कंपनीज के लिए बहुत बढ़िया होगा क्योंकि सबसे बड़ा एवरेज रियलाइजेशन का ये टाइम था अक्टूबर टू दिसंबर और सारे जो कंपनीज के नतीजे आएंगे जैसे इंडियन होटल्स है, ईस्ट इंडिया होटल्स है, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स है, इनके नंबर्स आप देखोगे बहुत ही तगड़े आने की उम्मीद रहेगी और आने वाले समय में भी जिस प्रकार का सप्लाई होटल रूम्स में आ रहा है वो डिमांड के मुकाबले में काफी कम है। तो मुझे लग रहा है कि अच्छे इस निवेश के लिए मौके बहुत बनेंगे और ये एक ऐसा सेक्टर होगा जो इन्वेस्टर्स को काफी पैसा अगले 12 महीने में कमाने की कैपेसिटी रखता है। वेल, आपके कहने पे एक नया आजकल एक शब्द चल रहा है, रिवेंज टूरिज्म, आफ्टर कोविड एंड आफ्टर द पैंडेमिक, एंड दैट हैज कॉट ऑन। वेल, विल गो इन फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक एंड विल बी बैक वेरी सून। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242।
स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम मार्केट मंत्र में एक बार फिर से। और अब हम रुपए की ओर बढ़ते हैं। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 57 पैसे मजबूत रहा और 82 रुपए के नीचे आकर 81 रुपए 79 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर जाकर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 0.21% मजबूत होकर 103.21 पर आ गया। अविनाश, आज कई दिनों बाद ये स्थिति देखी गई कि रुपया 82 से नीचे आया और 81 रुपए 79 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। किस तरह की स्थिति ये दर्शाता है हमें? देखिए, एक बात तो काफी अच्छी है, आपने सही कहा कि आज रुपया बहुत समय के बाद एक अच्छा स्ट्रेंथनिंग का एक मूव दिखाई दिया। और अगर ऐसा होता है तो हमारा ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें काफी मदद मिलेगी। इसका एक मात्र कारण है कि डॉलर कमजोर हो रहा है। पहले डॉलर एप्रिशिएट हो रहा था और हमारा मानना है कि अगर रुपया इसी ट्रेंड के लिए चलता रहा तो कम से कम आने वाले 2-3 महीने में जो ट्रेड डेफिसिट और करंट डेफिसिट का जो मसला है, जो इंडियन गवर्नमेंट को काफी सता रहा है, वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। इन द नियर टर्म हमको कोई बड़ी वॉलेटिलिटी दिख नहीं रही है, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि डॉलर की जो चढ़त थी वो थोड़ी सी कमजोर हो चुकी है और उसका असर आपको वीक डॉलर में दिख रहा है और रुपया उसके सामने एप्रिशिएट हो चुका है। तो ये अच्छी बात है, स्पेशली जो डोमेस्टिक कंपनीज है जो ज्यादातर अपना सामान इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनके लिए इंपोर्ट अभी थोड़े से सस्ते रहेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक्सपोर्ट कंपनीज को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है अगर रुपया कंटिन्यूसली एप्रिशिएट होता है, क्योंकि उनको एक्सपोर्ट में डेफिनेटली थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई अगर रुपया कंटिन्यूसली एप्रिशिएट होता है। बट नेट मेरे ख्याल से इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हार्डनिंग रूपी का जो सिनारियो है वो अभी बिल्डअप हो रहा है, जो शायद आपको अगले 2-3 महीने के लिए मेरे ख्याल से यही स्थिति में रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। Avinash, perhaps the Chinese yuan driven by the country's easing real estate regulations has also contributed to the stronger rupee, briefly? What do you think? Partly, but I think you must understand one thing, that real estate is more of a domestic sector. Although a lot of foreign investors has come in the real estate sector. Right. You're right. I think real estate is also one pocket where there's a massive opportunity expected because the sector has now got regulated. The transparency in the sector has increased significantly. Right. Post-COVID, there's going to be a huge kind of demand for affordable as well as for middle level housing, and that is going to benefit all the real estate players, especially the larger and the middle ones which are operating in the market. Right. Let's move on to another story. Well, Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri has said that India will achieve 20% ethanol blending in petrol by 2025. He said India has increased the ethanol blending in petrol from 1.53% in 2013-14 to over 10% in 2022. The minister said government is setting up 5 second-generation 2G ethanol biorefineries in the country at Panipat in Haryana, Bhatinda in Punjab, Bargarh in Odisha, Numaligarh in Assam, and Devangere in Karnataka. और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि ई संजीवनी भारत की डिजिटल स्वास्थ्य पहल को सशक्त बना रही है। इसके माध्यम से देश के दूर दराज के क्षेत्रों में भी लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। सरकार की इस मुफ्त स्वास्थ्य टेली परामर्श सेवा ई संजीवनी का अब तक 9 करोड़ लोग उपयोग कर चुके हैं, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। और अब हम एशियाई बाजार पर नजर डालें तो एशियाई शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख देखा गया। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में मामूली 0.1% की बढ़त हुई। जापान का निक्केई सूचकांक 0.8% लाभ में रहा। वहीं दूसरी तरफ चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.2% की सुस्ती आई। हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 0.3% नीचे आ गया। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम इंडेक्स 1.3% के नुकसान के साथ बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजार पर नजर डालें तो अंतर्दिवसीय कारोबार में गिरावट देखी गई। लंदन का FTSE 100 0.2% लुढ़क गया। जर्मनी का डेक्स 0.5% घाटे में चल रहा था और फ्रांस का कैक 40 0.7% नीचे आकर कारोबार कर रहा था। अविनाश, ये एशियाई बाजारों और विदेशी शेयर बाजार पर आपकी क्या राय है? देखिए, मुझे लग रहा है कि विदेशी बाजार में यूएस का मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। अभी नतीजों का सीजन वहां पे भी आएगा। रही बात यूरोप की मार्केट्स में, तो एक अच्छा पॉजिटिव सिग्नल जो मिला है कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा मॉडरेट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि वॉलेटिलिटी जो ग्लोबल मार्केट्स में हमको दिख रही है वो आने वाले दिनों में थोड़ी सी सेटल हो जाएगी, और अगर सेटल होती है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे भी आना चाहिए। हमको लग रहा है कि नतीजों का सीजन है तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस रहेगा। हमको लग रहा है कि 17,800 17,700 का जो लेवल है वो स्ट्रांग बेस है इंडियन मार्केट्स के लिए। लेकिन अगर कोई बड़ी वॉलेटिलिटी आपको यूएस में या यूरोपियन मार्केट्स में दिखती है तो उसका असर
आपको हमारे इंडियन मार्केट्स को भी देखने को मिलेगा. तो मोटा मोटी ट्रेंड वोलेटाइल रहेगा, लेकिन आई थिंक इंडियन मार्केट्स हैव मोर और लेस discounted the worst what is happening in US and Europe. जी. Well, Nikhil, as we all know that India is has world's third largest number of startups, and now here's the news of the Startup India Innovation Week, which is being organized from today till the 16th of this month to celebrate the Indian startup ecosystem and National Startup Day. The Innovation Week is intended to foster a spirit of entrepreneurship and innovation in the country. The Commerce and Industry Ministry said knowledge sharing sessions for entrepreneurs, aspiring entrepreneurs, officials, incubators, corporates and investors will be organized during the Startup India Innovation Week. What do you have to say on this, Avinash, that we are raring to go? We have many unicorns now. Yeah, definitely. I think India is one of those countries which can proudly say that we've got a large number of unicorns which have been, started in the country. I think the startup evolution has begun, and I think it will continue to grow in significant kind of, speed even in 2023. I think what the market expects is that most of these startups which actually are planning to go public, on the valuation side, there could be some, moderation on the valuation multiples, because in the past we've seen a lot of fintech companies which were startup companies which went public and have not delivered the numbers. So I think a lot of accountability and a lot of cost consciousness is now coming in startups, which is a good thing. Actually help value creation, for investors who have actually put money in these startups. But definitely I think the overall environment for startups is going to be pretty solid. And I think that is going to continue unabated. Yes, we are moving up in the ease of doing business constantly. And of course, the government has been trying to remove all the creases as far as startups are concerned, whether it's the taxes or what have you. Well, moving on to the U.S. markets, the U.S. stocks traded mixed yesterday. The Dow Jones index fell while the S&P 500 index erased early gains to close nearly flat as expectations that the Federal Reserve will become less aggressive with its interest rate hikes were offset by lingering worries about inflation. The S&P 500 slipped marginally by 0.1% and the Dow Jones Industrial Average fell 0.3%. However, the Nasdaq Composite Index managed to add 0.6%. What are your views on the U.S. markets, Avinash? Because they have a ripple effect on the global economy. Yeah, I think U.S. markets will continue to remain volatile. As I mentioned to you that, the Fed Governor, Mr. Powell, has clearly stated that, he is in no mood to reduce interest rates, at least in the very near term. Indications are that interest rates could even exceed 5%, and that is definitely not a good sign, at least in the very near term. Their first focus is going to be on inflation. So I think in the very near term, you could find a lot of volatility in these in the U.S. markets, both on the manufacturing side as well as on the fintech, on the technology side. So I would believe that it's going to be pretty challenging, at least for the first 3 to 4 months of 2023, and we'll have to live with that volatility. Although I think companies which are directly exporting to the U.S. or Europe are the companies which are going to be under tremendous stress, especially IT companies, where a large percentage of their revenue comes from US and Europe, the metal companies as well as, pharma exports. So I think till the time, things don't get very clear and conclusive, we believe that, it could be a little challenging period for even the Indian companies which are dependent on both the US and European markets for business. Right. Look at the oil prices today. Oil prices today added 0.5%, trading in a narrow range as the market awaited the Federal Reserve's plans for rate hikes to gauge the impact on the economy and fuel demand. In intraday trade, Brent crude was trading at $80 per barrel, while WTI crude price was at $75.10 per barrel. और सोने पर नजर डालें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य अंतर दिवसीय कारोबार में 105 रुपए गिरकर 55,760 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। मार्च अनुबंध वाली चांदी भी 670 रुपए की गिरावट के साथ 68,230 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बिना किसी खास उतार चढ़ाव के साथ $1,879 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। अंतर दिवसीय कारोबार में चांदी लुढ़क कर $23.60 प्रति औंस पर चल रही थी। अविनाश जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. And friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Domestic stocks witnessed losses of 1%. Sensex closes near 60,100 points. Nifty settles near 17,900 level. The rupee strengthens 57 paise against the US currency to trade below the 82 rupee per dollar mark. And Brent crude hovers around
$80 per barrel. Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Nikhil Kumar, signing off. Namaskar. Market Mantra.